सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस सिंपल फोटो को कैसे ये ड्रामेटिक लुक दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम फोटो ओपन करते हैं। फोटो ओपन करने के बाद Ctrl+J करेंगे। देन स्किन को रिटच करेंगे। देन स्किन रिटच होने के बाद हम जाएंगे फिल्टर पर और सिलेक्ट करेंगे कैमरा रॉ। और कैमरा रॉ फिल्टर में हम थोड़े से एडजस्टमेंट करेंगे। देन एडजस्टमेंट होने के बाद हम जाएंगे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर। हम जाएंगे लेवल्स पर। देन हम आते हैं एक्सपोजर पर। ओके, देन हम मर्ज विजिबल करेंगे और एक लेयर कॉपी करेंगे। बाद में हम रीनेम देंगे ब्लर एंड हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देन हम मर्ज डाउन करेंगे और थोड़ा सा हम फोरग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। देन हम सिलेक्ट
इन्वर्स करेंगे और बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। ओके, देन इमेज पर राइट क्लिक करके फ्लैटन इमेज करेंगे और उस लेयर का डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। देन इमेज में आएंगे, मोड को सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे और डोंट फ्लैटन करेंगे। ये होने के बाद चैनल पर जाएंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करके और बाद में कंट्रोल प्लस सी करेंगे, बी सिलेक्ट करेंगे और जाके कंट्रोल प्लस बी करेंगे। देन सिलेक्ट ए, गो लेयर्स एंड ओपेसिटी एंड फिल को एडजस्ट करेंगे। ये सब होने के बाद वापस इमेज पे जाएंगे, मोड पर जाएंगे और आरजीबी कलर करेंगे। एक कॉपी लेयर बनाएंगे, एक्सपोजर पर जाएंगे, कलर बैलेंस में जाएंगे, select layers and merge. Add PNG light. सर्च पर जाएंगे, राइट क्लिक करके फ्लैटन इमेज करेंगे, लेयर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस जे करके
and add some dodge and burn effect. सो गाइज, ये थी मेरी एडिटिंग। अगर आपको मेरी एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, सो गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो पीस आउट।